हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस के फंडी। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की टॉप 55 लाइन्स, मतलब सारा का सारा चैप्टर कवर इन अ सिंगल पॉडकास्ट। तो करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। फर्स्ट सेंटेंसेस: ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड्स थ्रू द वास्कुलर सिस्टम विच इज़ नोन एज translocation. Transport in xylem is essentially unidirectional, whereas in phloem it is bidirectional. In diffusion, substance move from high concentration to low concentration. Diffusion is a very important to plants since it is the only means that for the gaseous movements within the plant body. Next is the diffusion of the substance across the membrane also depend upon its solubility in the lipids. Again, solubility in water से नहीं, but solubility in lipids is also important and it is the major constituent of the membrane, right? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन constituent है ना, constituent है हमारा lipids, 52 to 40% होता है, right? कौन सी डिफ्यूजन है जिसके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स जो हैं उन्हें चाहिए होते हैं मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए, पर एटीपी की जरूरत नहीं है, स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। डैश are the proteins that form huge pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria and some bacteria, allowing the molecules up to size of small proteins to pass through. Porins are the proteins that form the huge pores in outer membranes of the plastids, mitochondria and some bacteria, allowing the molecules up to size of small proteins to pass through. Water channels are made up of 8 different type of aquaporins. Okay, in symport both the molecule cross the membrane same direction, whereas in antiport both cross in the opposite direction. Pumps, they are the proteins that are used as energy to carry the substance across cell membrane in active transport. A watermelon has over 92% of water and most herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh weight as the dry matter. Terrestrial plants take up the huge amount of water, but most of it's lost to the air through evaporation from the leaves due to transpiration. Solute potential and water potential are the two main components to determine the water potential. Water potential is denoted by a Greek symbol psi and is expressed in the pressure units Pascal. For a solution at atmospheric pressure, water potential is 0. Osmosis is the term which is used to refer specifically diffusion of water across a differentially or semi-permeable membrane. The net direction and rate of osmosis depend on both the pressure and concentration of the gradient. More the osmotic concentration, greater is the osmotic pressure which is required to prevent the water from diffusing in. Numerically, osmotic pressure is equals to osmotic potential, but the sign is opposite. Osmotic pressure is always positive and we discussed that sign is opposite, so osmotic potential have negative sign. If the external solution balance the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic, and if the cell swell in the solution, it is referred to hypotonic, and it shrinks, that it is hypertonic. Plasmolysis occurs when a water move out of the cell and cell membrane shrinks away from its cell wall. When water flows into the cell and out of the cell in the equilibrium it flows and out of the cell are flaccid. सब कुछ निकल जाएगा तो वो बेचारे पिचकू से रह जाएंगे, that is known as flaccidity. Water diffuse into the cell causing the cytoplasm to build up pressure against the wall. That pressure refers to turgor pressure. What is turgor pressure? Turgor pressure is responsible for building up the pressure against the cell wall, which is responsible for enlargement and extension of the growth of the cell. Imbibition, it is a special type of diffusion when water is absorbed by solid colloids which causes them to increase enormously volume. Imbibition एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें पानी सॉलिड और कोलॉइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कॉज करते हैं
कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तुम्हारा। एब्जॉर्प्शन बाय वाटर बाय सीड, सीड जो पानी सोखता है, या तुम्हारी जो सूखी लक्कड़ ड्राई वुड होती है वो जो पानी सोखती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2.5. The movement of water exclusively through the intercellular spaces and walls of cell occur through the apoplast pathway. It occurs through the apoplast pathway जब सेल वॉल से होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो मूवमेंट है एक मॉलिक्यूल की, जो मूवमेंट है टिपिकल प्लांट सेल में 2.5 सेकेंड्स लगते हैं, एंड एपोप्लास्ट पाथवे जो इंटरसेलुलर स्पेसिस और सेल वॉल्स के थ्रू पास होगा। नेक्स्ट है कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है। सिम्प्लास्टिक पाथवे के दौरान जो वाटर है आपका ट्रैवल करता है थ्रू द सेल, सेल के बीच में साइटोप्लाज्म से निकल के जाता है वो, ठीक है। एंड इंटरसेलुलर मूवमेंट होती है जो वाटर की, काफ़ी सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, उसके साइटोप्लाज्म में से होकर जाएगा। तो ये कौन किसके थ्रू होगा, दैट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्लियर। Next is most of the water flow in the roots occur via apoplast or symplast. It is apoplast pathway, बाहर से। Endodermis is impervious to water. Endodermis में से पानी नहीं जा सकता, क्यों? Because of the band of submerized matrix. वहाँ पे एक मैट्रिक्स होता है, उसका बैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्राइप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्राइप। Dash is a symbiotic association of fungi with the root system, mycorrhiza, and also information that pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. Pinus mycorrhiza के बिना नहीं जी सकता because उसके seeds germinate नहीं हो पाते हैं। Various ions from the soil are actively transported into the vascular tissues. Water follows and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure in roots is known as root pressure. Water loses its liquid phase from the plant. Plant से liquid वाला phase जा रहा है, that is known as guttation. That is known as guttation. Guttation. Next is root pressure does not account for the majority of the water transport. Most plants meet their need by, जब रूट प्रेशर नहीं हो रहा होता तो प्लांट्स की जो नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल होती हैं, इट इज़ बाय ट्रांसपिरेटरी पुल। वाटर इज़ मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड दैट ड्राइविंग फोर्स दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड द लीव्स फ्रॉम द लीव्स, एंड दिस इज रेफर टू एज डैश मॉडल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। कौन सा मॉडल है ये, कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स अकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा। इवेपोरेटिव लॉस कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एडेड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल। जो माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। कौन सी माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं, सेलुलोज। अच्छा, अगर उनको रेडियली ओरिएंट करें या फिर लॉन्गिट्यूडनली करें, कौन ईजी होगा, रेडियली ओरिएंटेड जो होंगी माइक्रोफिब्रिल्स दैट विल बी बेटर देन द लॉन्गिट्यूडनल वन because it will make easier for the stoma to open. Usually the lower surface of a dorsiventral leaf, lower surface of the dorsiventral leaf has a greater number of stomata, while in an isobilateral leaf they are about equal on the both surface. जो स्टोमेटा है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ है आपका, तो उसके नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा होंगे। आइसोबाइलेटरल, आइसो का मतलब तो सेम है, तो इक्वल होगा बोथ सर्फेसेस पे। Attraction of water molecule to the polar surface such as the tracheal surface, it is known as adhesion. Attraction चिपकना, adhesion. Measurements reveal that the forces generated by transpiration can create the pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 meters high. It is 130 meters high. Most mineral enter the root by dash absorption into cytoplasm of epidermal cells. It is through the active absorption into the cytoplasm of the epidermal cells. Transport proteins of the dash cells are control points. They are control points. किसके cells? Transport proteins के किसके cells control points होते हैं, जहाँ पे प्लांट एडजस्ट करता है क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट जो कि जाइलम के पास पहुँचता है, एंडोडर्मल सेल्स। The roots of endodermis, because of layer of suberin, has ability to actively transport the iron in one direction only.
Food, primarily sucrose, is transported by vascular tissue phloem from source to sink, and the source is basically understood that source is the part which synthesizes the food for the plant, like leaf, whereas sink is the part which stores the food. Okay, source is that will synthesize the food, and sink is that will store the food. The accepted mechanism which is used for translocation of sugar from sucrose to sink, it's source to sink. ओके, ट्रांसपोर्टेशन शुगर का सुक्रोज में से निकाल कर सिंक को देना है, तो क्या कौन सा हाइपोथेसिस लगेगा यहाँ पे? प्रेशर फ्लो का हाइपोथेसिस अप्लाई होता है। शुगर मूव करती है सुक्रोज की फॉर्म में कंपेनियन सेल्स से, ठीक है, एंड लिविंग फ्लोएम में, सीव ट्यूब सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। एलिमेंट्स जो इजीली रेडली मोबिलाइज होते हैं, मूव कर सकते हैं, दैट आर PSNK, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटाशियम। C4 प्लांट्स कितने एफिशिएंट हैं C3 के मुकाबले में कार्बन फिक्सेशन में? ट्वाइस। द इनर सेल वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवार्ड्स द स्टोमेटल अपर्चर इज, इनर सेल वॉल जो गार्ड सेल की होती है, जो स्टोमेटल के अपर्चर के फेस कर, ये देखो, ये जो इनर सेल वॉल है वो क्या थिक है और इलास्टिक है, क्योंकि